इकबाल ने कहा था, अल्लामा इकबाल ने कहा था 100 साल पहले कि गए मैं अंजुमन में, अब मेरे रास्ता और भी हैं। मैं जनाब असद ओवैसी साहब की बिहाफ पे कह रहा हूँ ये कि आपने देखा ज़माने, तो ये बड़ी अच्छी बात है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बात पे मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ जनाब असद ओवैसी साहब को और उनके सब साथियों को कि ऐसा हिंदुस्तान में बहुत कम होता है जब पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में डिस्कशन होता है तो हमारे एमएलए एमपी उसमें बढ़ चढ़ के और बड़ी जोर शोर से हिस्सा लेते हैं। मुझे एक बार शशि थरूर साहब ने कहा था कि पार्लियामेंट में सिर्फ जो मेहनत करके आता है जब भी डिस्कशन और डिबेट होता है और वो है असद ओवैसी। अक्सर पार्लियामेंट लाइब्रेरी में उन्हीं को देखता हूँ मैं। तो ये जो एग्जाम्पल इन्होंने 15-16 साल से बल्कि ज्यादा से सेट किया हुआ है, ये अब और जवान यंगर बात हो रही है कि जहाँ पे हमारे एमपीज और हमारे एमएलए हमारे लीडर उन बातों को सुनने के लिए तैयार हैं जो डॉक्टर ढूंढ के एस्टिमेट करके कैलकुलेट करके एक एविडेंस बेस एस्टैब्लिश करके बताते हैं कि ये वाकई ये सोल्यूशन है, ये एक वाकई एम्पेरिकल एविडेंस बेस्ड सोल्यूशन है जो हमें इख्तियार करना चाहिए। 4 रुपए के नोट पर या 4 घंटे में सारा लॉकडाउन हो जाएगा, ये ऐसी चीजें कोई बड़े समझदार मुल्क में नहीं होती। जीएसटी जब लागू हुआ और आप लोगों में से कई लोग उसको आपने देखा कि कितना उससे नुकसान पहुंचा दुनिया में, उसकी एक बड़ी वजह ये थी और हम जैसे लोगों ने बार बार ये कहा कि आप जीएसटी जैसे अच्छे कानून को 15 दिन में और 2 महीने में लागू नहीं कर सकते। आप लोगों को पता नहीं, आपको ये मालूम नहीं अपने ब्यूरोक्रेसी को, अपने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को कितना वक्त दिया उसके लिए तैयारी करने के लिए। फ्रांस जैसा मुल्क, छोटा सा एडवांस टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड मुल्क ने 17 साल लिए जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में। मलेशिया ने 30 साल लिए, उसके बाद भी उनके पास कई प्रॉब्लम्स हैं। हमने कितने दिन दिए? 15 दिन। ना हमारा आईटी नेटवर्क काम कर रहा था, ना हमारा टैक्स नेटवर्क काम कर रहा था। उसके बाद हमने कह दिया कि नारायण मूर्ति एंटी नेशनल, क्योंकि उनकी इंफोसिस ये कर नहीं पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इतिहास को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, जब ये पॉलिटिशियन नहीं थे और इनकी खास बात यूनिक किस्म के जर्नलिस्ट थे। ये इनकी जो मेहनत होती थी इंटरव्यूज में, इनका जो मेहनत होती थी इनकी रिपोर्टिंग में, वो वाकई यूनिक थी। यानी वो हम सब लोग हो गए और मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है कि तो मुबारकबाद आप सब लोगों को कि आप भी लोग आए। आप लोगों को मैं इसलिए मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आप जो Mr. G. Sudhir, Dr. Amarullah Khan, Nidina Matthews, Nahia Hussain, Sriram, that's me, Anjana Divakar, Ismail Sheikh, and Syed Salmanuddin. Coming to this conference today, and I now hand over to the Dua Foundation to Mr. Bilal. Former IAS officer, chairman of the Commission of Inquiry into the socio-economic and educational condition of Muslims in Telangana, Dr. Amarullah Khan. Dr. Khan is a research director at CDPP. He is a developmental economist. He teaches at the ISB, IIFT, NALSA, NCR HRDI, and TIS. Biannually by Sage Publishers, and consists of book reviews and special essays, in addition to academic papers. A few of our collaborators are CRIDP, ICBC, Rockefeller Foundation, Global University, MS Academy. Dignitaries that will be hosting this is Dr. Professor Amarullah Khan, Advocate Mr. Shakir Khan, who was appointed by the government of Maharashtra as a special counsel for the state. Lockdowns amid the second wave, New Education Policy 2020, preparing a post-pandemic globalized world, reimagining the university education
after COVID-19. CDPP brings out a series of incisive articles, working papers regularly on its website. We also publish a journal of development policy and practice. This is a multidisciplinary journal, academic journal. Why we are part of this seminar. The sole objective of Dua Foundation is uplifting the needy and creating a visible social impact. In 2015, we launched a program aiming at women empowerment that evolved into a larger vision. And it gives me great pleasure to announce that within 6 years, we've expanded into more than 6 sectors. Our projects in women empowerment, poverty, education, vocational skills and healthcare sector have impacted more than 2 lakh lives. All this was only possible under the able leadership of Aurangabad Member of Parliament, also our President, Mr. Imtiaz Jaleel, and to those of you who don't know, he also happens to be my father. Moving on, our primary mission was to have a training centers for skilling women and to establish primary health centers in Aurangabad by 2025. Ultimately, our objective is not limited to improving lives in Aurangabad, but to make a meaningful difference in the lives of people all over India. We commenced our operations by launching a project in the sector of women empowerment in Aurangabad, Maharashtra. Under this program, we were able to provide free stitching classes to 50 women per batch, and eventually we could gift each of these women a sewing machine so that they could become self-sufficient in this field. We also tied up with clothing factories which would then directly hire those women who performed efficiently from each batch. We are on our 6th batch right now and the journey has only gotten better. We have a team that sits 5 days a week to help create a better route for citizens trying to avail government schemes. We have seen over the years that the government launches multiple schemes but they fail when they don't reach their target audience. We at Dua Foundation try and bridge that gap between the two. COVID was a tough time for all of us and the Dua Foundation team was on ground trying to help in every possible manner. We donated saline bottles, oxygen concentrators. We also ran a daily kitchen trying to provide food for people who were left with no one due to the pandemic. We saw the migrant laborers walk all over the country and there were a lot of migrant laborers that crossed from Aurangabad as well. Our team helped these migrant laborers by providing them resting spaces, food for the journey ahead. We saw during the pandemic a shortage of beds and ambulances. We did a little bit by donating more than 3 ambulances for Aurangabad districts, which are running free of cost as of today. Our plan is to make it into 5 more ambulances. Given my time constraints, I'd like to highlight one more project that we have taken up, which is the police training camp. We organized an entrance test and according to the scores, we almost selected 150 students who are now being trained for upcoming police service entrance exams. We do have a plan for the coming years and we wish to further expand our agenda of a safer, educated and a more inclusive society. And to get at par with the mainstream, we will try our best to bridge the gap between the backward minority and the mainstream, and for that we will need your support. With this I will take your leave and the seminar will be taken over by CDCC. Thank you so much. This morning, we welcome everybody and the Center for Development Policy and Practice and the Dua Foundation invite you to a conference on situating development of Muslims in Maharashtra today.